Very good morning, students. I shall be taking your polity classes, and to start off with that, we shall be taking care of the very first chapter today. That is there in your handbook, which talks about the very basic features of your Indian Constitution. Okay. My idea is before trying to understand what the basic features of the Indian Constitution are, the consideration, the idea of the Constitution, however it came down to us, that process needs to be understood as well, right? We all understand the fact that we were under a foreign company, we were under a foreign crown, and that particular thing goes off to around 200 years. Okay, so following which, in the year 1947, we did have our independence. Following which, we also created a constitution for ourselves. Finally, in the year 1950, we are a republic now. Okay, so these developments do need to be understood in the past. The idea of the constitution, however it came down to us, process needs to be understood. और यही सब बताने के लिए, यही सब पूछने के लिए, यही सब जानने के लिए आज हम लोग ये क्लास कर रहे हैं. All right. So in this process, we do need to understand that India was governed starting 1757. So India was governed through certain regulations, through certain acts, which were directly governed by the company which was rather ruling us. Okay, so in that particular idea, we do need to understand that there are certain years which are important for us. All right. 1773, in between 1781 and 1784. Then comes your 1793. Then comes 1813, 1833, and 1853. All right. We very well understand post this there was an event which happened in the year 1857, 1858, which we do call the Sepoy Mutiny, or the very first war of Indian independence, right? So before this particular thing, all these timeline, there were numerous acts which did take place. It was done directly by the company which was governing us, which was East India Company, right? The English East India Company, to be very precise. Okay, 1600 becomes important. Why? Because it was this particular year when the English monarch or the British monarch gave the monopoly rights to the East India Company to come and trade down with India, right? Following which, the year 1765, we are very well aware of the fact that in the year 1764, we did have a battle which we do call as the Battle of Buxar. ठीक? So Battle of Buxar के बाद क्या हुआ? Diwani rights East India Company के पास आ गया. ठीक है? So Bengal, Orissa, and Bihar, these are the three provinces which were heavily revenue seeking. That is the reason the East India Company took the revenue rights of these three provinces. Following which, their idea of trying and ruling India comes down to us as now. Okay, so यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि उन लोगों का जो प्रॉफिट है कंपनी का, वो प्रॉफिट बहुत बहुत कहीं कहीं it was limited, right? But in the other sense, what happened is जो कंपनी के लोग थे, जो कंपनी के servants थे, they were trying and becoming very rich. Okay? So in this idea, जब तक हम लोग इस टाइम पे आते हैं 1773 तक, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट क्या देखता है कि जो कंपनी के सर्वेंट्स यहाँ पे काम कर रहे थे, the people who are working for it, these people started becoming very rich, right? However, company यहाँ पे डूब रहा था. ठीक है? Company was not making profits. Company was heavily going under losses, because of which the directorate of the company wanted to go back to the English parliament, seeking for some kind of help from them. All right. So इसी वजह से पार्लियामेंट को, ब्रिटिश पार्लियामेंट को एक थोड़ा सा जगह मिल गया जहाँ पे they wanted to have some kind of regulations about this company, ताकि वो लोग इस कंपनी के जो द डेली डे टू डे अफेयर्स उसको क्या कर सकता है, उसको रेगुलेट कर सकता है. ठीक है? सो इसी वजह से यहाँ पे द ब्रिटिश पार्लियामेंट enacted an act which we call the regulating act of 1773. ठीक है? ये एक्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसी वजह से है क्योंकि यहाँ पे it was for the very first time the British Parliament acknowledged the administrative powers that the East India Company can have over the Indian terra firma. ठीक है? So यहाँ पे कुछ provisions थे जो जिसको हम लोग अगर एक nomenclature कर दे GPSP SC. ठीक है? So इससे हम इसको याद रखने के लिए हमारे लिए easy हो जाता है. So what happened is before 1773, the Indian terra firma particularly had
थ्री प्रोविंसेस, ठीक है। यहाँ पे कहीं आपका क्या था, बंगाल प्रोविंस था, यहाँ पे क्या था, बॉम्बे प्रोविंस था, और यहाँ पे क्या था, मद्रास प्रोविंस था, ठीक है। So, इन तीनों को गवर्न करने के लिए ऑल दीज थ्री थ्री प्रोविंसेस हैड अ गवर्नर, ठीक है, हैड अ गवर्नर, ठीक है, हैड अ गवर्नर। अभी अभी व्हाट हैपेंड इन द एक्ट ऑफ 1773 वाज कि अगर हमें इन तीनों को कहीं ना कहीं अगर रेगुलेट करना है, इफ वी नीड टू ट्राई एंड रेगुलेट ऑल ऑफ देम, व्हाट वी नीड टू डू इज इन तीनों में से किसी एक को वी नीड टू मेक देम सुपीरियर, ठीक है। सो व्हाट द ब्रिटिश पार्लियामेंट डिड वाज कि जो बंगाल का गवर्नर था उसको हमने अभी क्या बोल दिया, वी हैव नाउ स्टार्टेड कॉलिंग हिम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। एंड इन दोनों गवर्नर्स को इनके अंडर कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। तो अभी इसको हम लोग रेगुलेट कर सकते हैं, सेंट्रलाइज कर सकते हैं, राइट। सो इसी वजह से दिस वाज द वेरी फर्स्ट प्रोविजन ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, ठीक है। अभी देखिए, जब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कुछ काम करेगा, इफ ही नीड्स टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी, इफ इट नीड्स टू एक्ट ऑन द बिहाफ ऑफ द क्राउन, so what it has to have is it has to have a set of officers, it needs to have a set of council जिसके थ्रू he or she can definitely try and work, right? So because of which what we did was इसके इनको हमने एक फोर मेंबर काउंसिल का एक काउंसिल दे दिया, फोर मेंबर काउंसिल, एंड वी स्टार्टेड कॉलिंग इट द गवर्नर जनरल्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ठीक है। वी स्टार्टेड कॉलिंग इट द गवर्नर जनरल्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ठीक है। सो अभी एग्जीक्यूटिव काउंसिल क्या करेगा, जितना कुछ काम होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव होगा, वॉर्स देखेंगे, व्हाट एवर द कंडीशंस आर, ऑल ऑफ दीज पर्टिकुलर थिंग्स आर टू बी एग्जीक्यूटेड बाय द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल through this particular council, the members of which are four, ठीक है। So this particular council would have one governor general and four क्या है, members है, ठीक है। Now despite the fact that the governor general of Bengal was made powerful in this particular idea, what we realize is that this governor general was not given any kind of veto power, ठीक है। तो इन पांचों में से अगर तीन जन, and there's a division of 2 and 3, and the governor general agrees to this particular idea, ठीक है। So क्या होएगा is यहाँ पे गवर्नर जनरल का अगर आइडिया हो भी, so what happens is यहाँ पे जिस because there is a majority, so because of this idea the governor general का जो intention होगा, the idea with which the governor general has propounded something, उनका weightage, उनका जो value होगा, it is kind of going to deteriorate, ठीक है। So because of this the governor general was only given a casting vote, ठीक है। कभी अगर कोरम के वजह से if there is a division, से दो यहाँ पे, दो वहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, so the governor general is going to only have a casting vote, ठीक है। So governor general को हमने क्या नहीं दिया, we did not give him a veto power, ठीक है। So in this idea this was the third provision that we have. The very first was कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को हमने क्या बना दिया, गवर्नर ऑफ बंगाल को हमने बना दिया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। उसके बाद उनको हमने एक 4 मेंबर का एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल दे दिया, and also to understand the fact that we didn't give him any kind of veto, all right। The very fourth provision of the Act of 1773 would be, see for example, there are three provinces as of yet, right? Bombay province, Bengal province, and Madras province. Because there are three different provinces, despite the idea that the Governor General of Bengal is a superior one, this also has got a legislative power of itself. ये भी अपने province पे अपना काम कर सकता है, और ये भी अपने province पे अपना काम कर सकता है, ठीक है। So for example, understand कि there is an idea particularly that brings about a connotation, that brings about a confrontation between all these three provinces, Bengal, Bombay and Madras, ठीक है। अगर एक confrontation आ गया, so what is going to happen, कौन 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 उसको देखेगा, टू कैरी ऑफ विद दिस आइडिया, हमने एक क्या बना दिया, हमने एक सुप्रीम कोर्ट बना दिया, जिसका 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 सीट कहाँ पे होगा, इट विल बी इन कैलकाटा, सॉरी इट विल बी इन कैलकाटा, ठीक है, इट विल बी इन कैलकाटा। एंड वहां पे हम लोगों ने क्या कर दिया, वी हैव वन चीफ जज एंड वी हैव थ्री अदर जजेस, ठीक है। द वेरी फर्स्ट चीफ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट वाज सर एलिजा इम्फे, ठीक है। सो इस डिस्प्यूट को देखने के लिए व्हाट वी डिड वाज, हम लोगों ने एक सुप्रीम कोर्ट बना दिया, फाइन। अभी there is another provision where what has happened is the court of directors,
जो कंपनी का ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है, द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, so the court of directors is going to directly report to the British Parliament on all the ideas of the company. ठीक है, revenue, war, trade, whatever it is, all of these ideas are going to be taken care by the court of the directors, and the court of directors is going to report back to the British Parliament. ठीक है, हमें रेगुलेट करना है, वी आर वांटिंग टू रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ द कंपनी. यस, why did we do so? Why did we do so? Because the company was making losses. The company was wanting a loan from the British Parliament. However, on the other side of it, on the silver lining of it, the officials, the company servants, they were earning huge profits by themselves. Okay? Why? Because they were invested. They were invested in private trade. So the company regulation of this particular year also did what? कि यहाँ पे हम लोगों ने एक provision बना दिया कि the servants of the company will not engage in private trade. ठीक है, प्राइवेट ट्रेड में हम लोग इनको अलाउ नहीं करेंगे. दीज आर ऑल द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट ऑफ 1773. ठीक है, आज हम लोग यही समझेंगे. इन द नेक्स्ट क्लास वी शैल टेक अबाउट द अदर एक्ट्स. ठीक है, एंड ईच एंड एक एक क्लास में हम लोग एक एक्ट समझने की कोशिश करेंगे. एंड इन द आइडिया कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो आइडिया है, द फ्लोएज ऑफ द आइडिया किस तरह से हम लोगों के पास आया, वो हमें समझना है. ठीक है, and how the Indian terra firma was governed before the independence journey, वो हमें भी देखना है. ठीक है, आज के क्लास में हम लोग सिर्फ this we are taking care of the regulating act of 1773. I am hoping कि you are now in a state to consider कि regulating act किस वजह से आया था, and despite the Diwani from 1765 until 1773, what were the conditions जिसके वजह से हम लोगों को regulating act आना लाना पड़ा, right? So ये these are concepts which will help clear your examinations. And with this particular idea, I shall be resting my class herein. With a hope that I shall meet you in the next class while we try and discuss the Act of Settlement that was in the year 1781. Then in the year 1784 and following which we had a Charter Act 1793. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग वो समझने की कोशिश करेंगे. थैंक यू.